Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Minu Agarwal, your biology subject mentor. Now respiration in organisms. We talk about higher organisms now. We are talking about reptiles. We are talking about mammals. We are talking about amphibians and birds. Right? Higher organisms की बात करें तो they use different organs. They use lungs for respiration. Right? So terrestrial animals, we are talking about higher terrestrial organisms. They use lungs for breathing. Right? And these lungs, they have large surface area which is in close contact with the air, right? They are using lungs for respiration, and these lungs, they have large surface area which is in contact with the air. And very important point, ये जो lungs हैं ये delicate organs हैं because they are delicate organs, इसलिए ये एक protective shell के अंदर they are protected inside some protective structures, right? I'll repeat, जो higher organisms में respiration है कैसे होती है? With the help of lungs. Lungs, they are protected inside some bony structures, right? We will study in case of human beings, right? And these organs, they have special mechanisms with the help of some muscles and all that, which will help to carry out breathing and diffusion of gases, right? So this is respiration. We will talk about respiration in higher organisms. Especially we will take the example of respiration in human beings. Is that clear to you? Now let us start with respiration in human beings, right? Now respiration in human beings, it involves various organelles. The whole respiratory tract involves various organelles. Before I take up the organelles, let me tell you the main organs of respiration are what? Lungs. So what these are? Lungs. So main organ of respiration are lungs. Now before we take up the respiratory tract, we should understand ये जो lungs हैं ये क्या है? Muscular structures हैं. As you can say, they are muscular. They are not having any bones, but muscular structures हैं. They are delicate structures. They need to be protected. Protect करना जरूरी है. तो इनको protect कहाँ पे किया हुआ है? कैसे किया हुआ है? इन lungs के इर्द गिर्द क्या present है? एक bony cage present है, जिसको हम क्या कहते हैं? Rib cage. और rib cage ये जैसे, right? So front में they are protected by these ribs. These are called ribs. thoracic cavity में है और ribs ऐसे bones जैसे structure इनको protect कर रहे हैं और front में ये जो bone नजर आ रही है, this is called sternum. I'll repeat, lungs, they are the main respiratory organs. They are so delicate that they have to be kept inside some cage-like structures. Some protection is to be provided to them. And ये जो protection है, it is given to them by this structure which is called rib cage. So this is the rib cage. आगे से ribs, ये सारे ribs upper body में, right? Front में bone which is called sternum, पीछे backbone which is called vertebral column. तो आगे sternum protect कर रही है, ribs के साथ जो join कर रही है bone, front में sternum और पीछे की तरफ कौन सी? Vertebral column. Is that clear? Right? So what are the different structures of respiratory system? One is nose, leads into pharynx, pharynx leads into larynx, then trachea, bronchi, lungs, right? So basic functional unit of lungs is alveoli. So what is the basic functional unit of lungs? That is alveoli. So we can see here, right? Nose, this forms two things, right? That is openings of nose, they are called external nares or nostrils. Two openings towards outside, they are called external nares. They are leading into the nasal chambers or nasal cavity. They are leading into nasal chambers or nasal cavity. और इस nasal cavity या nasal chamber में क्या present है? Cilia. Cilia क्या करते हैं? Cilia plus mucus क्या present है? दो चीजें, cilia plus mucus. ये क्या करेंगे?
एंटी माइक्रोबियल एक्शन, मीन्स जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स एंटर करेंगे उनको ट्रैप करेंगे, प्लस दे हेल्प टू मॉइस्टन, गीला रखते हैं नेजल कैविटी को, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ओपनिंग्स, वो एक्सटर्नल लेयर्स किस में लीड कर रही हैं? नेजल कैविटी में। इज दैट क्लियर टू यू? नेजल चेंबर्स में क्या प्रेजेंट है? सीलिया एंड म्यूकस। वो क्या करते हैं? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं एयर के साथ उनको ट्रैप करते हैं, प्लस दे मॉइस्टन द एयर, दे एयर को वेट रखते हैं, राइट। एंड दिस एयर आफ्टर it enters from nostrils into nasal cavity, it goes into the next structure which is called as pharynx. So this is 12 centimeter long tube. आपको लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, राइट। इट इज कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए, फूड प्लस एयर, राइट। अगर तो फूड पास हो रहा है तो ये जो विंड पाइप है विच इज ओपनिंग बाय द लेरिंक्स, राइट, विंड पाइप की कवरिंग बंद हो जाएगी, फूड किस में चला जाएगा? फूड पाइप में। और अगर एयर पास होनी है तो वो क्या होगा? ओपनिंग खुल जाएगी, एंड दैट ओपनिंग which guards the larynx, this part is called larynx, it is having a opening called glottis के ऊपर कवरिंग है which is called epiglottis, leaf like कवरिंग रहती है जिसको हम क्या कहते हैं? epiglottis. So I'll repeat, ये जो larynx है, छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो फेरिंक्स के बाद स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसको हम क्या कहेंगे? लैरिंक्स। लैरिंक्स की ओपनिंग है उसको हम क्या कहेंगे? ग्लॉटिस, राइट, GLOTTIS, राइट। और ग्लॉटिस के ऊपर एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो उसकी ओपनिंग को गार्ड करता है, राइट, ताकि उसमें कोई फूड पार्टिकल ना एंटर कर जाए, इसको हम क्या कहेंगे? एपिग्लॉटिस। जब विंड एंटर करेगी तो एपिग्लॉटिस विल ओपन, right, it will get removed, it will open the glottis, right, glottis वाली opening खुल जाएगी, and then this what wind will enter or the air will enter into this larynx, and from larynx it will enter into this trachea. You can see this trachea, right, this structure is trachea, right. Again this is a muscular structure, and you know it during respiratory movements it expands and contracts, right. movements के दौरान इसकी expansion और contraction movements होती रहती हैं, तो इसलिए इसकी collapse ना हो जाए जब movement respiratory movements हैं, जब respiration हो रही है तो ये collapse ना कर जाए, इसलिए इसके इर्द गिर्द क्या present है? C-shaped, C की शेप में बनी हुई कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं इसके इर्द गिर्द, राइट, जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसकी कोलैप्स को, what you say, they check the collapse of trachea during the respiratory movements. I hope it is clear to you, right? Now this trachea, it will further form this bronchi, right? It will enter into the 2 lungs, right? It will enter into the 2 lungs forming bronchi, these structures, right? Bronchi will further divide to form bronchioles, right? Bronchi further divide to form bronchioles, right? These type of structures, and finally bronchioles, they form these pear-shaped sacs. These are called alveoli. I'll repeat again, right? Nose, this is nose opening into this cavity which is called, the opening into this tube which is called pharynx. Pharynx leads into larynx. Larynx further proceeds into trachea. Trachea divides to form bronchi, right and left bronchi, each entering into respective lungs. Lungs की 2 branches हैं, right lung and left lung. We will talk about lungs more in details, right? और bronchi, ये trachea फिर 2 bronchi में divide हो गई. Bronchi आगे किस में divide हो गई? Bronchioles में. Bronchi आगे किस में divide हो गए? Bronchi पहले बने, right? Bronchi आगे किस में divide हो गए? Bronchioles.
ब्रोंकाई में भी सी शेप कार्टिलेज रिंग कंटिन्यू करती हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स दोनों में सीलिया प्रेजेंट है। जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आगे एंटर कर जाते हैं एयर के साथ, वो उनको रिमूव करने के लिए होते हैं। ब्रोंक्यूल्स दे लीड इनटू एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है? पियर शेप्ड सैक्स हैं, राइट। दे आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड, राइट। वो उनको मॉइस्ट करके रखता है ब्लड। इट प्रोवाइड्स मॉइस्ट सरफेस टू द एल्वुलाई, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है इजी हो सके। एंड इनके सरफेस के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं लेसिथिन। वो सरफेस को फ्रिक्शनलेस, इट प्रोवाइड्स फ्रिक्शनलेस सरफेस to the alveoli during because they need to exchange the gases. They are the main functional units of the lungs. So I'll repeat again. What are the various organs of respiratory system? We have nose. Nose comprises of two parts, that is external nares and nasal cavity. Then this leads into pharynx. This leads into larynx. Larynx leads into trachea. Trachea leads into bronchi. Bronchi lead into bronchioles, and they finally lead into alveoli. So this is the basic plan of what are the different structures of what you say human respiratory system. I hope it's clear to each one of you, right? Now let us see more of this structure, right? As I have told you, that is nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, entering into lungs, lungs at the base having diaphragm, right? So I'll repeat here again. These about the lungs we will discuss, right? Now as I told you, main structures क्या है respiration के? They are the lungs, right? अब यहाँ पे आपको again you can see this nasal cavity pharynx, pharynx से फिर गया दो ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, एक आ गया larynx और एक चला गया food pipe. We don't know if the wind is passing, if the air is passing, it will go into trachea फिर आगे bronchi, right? ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स। ये तो एक लंग में, दूसरे लंग में भी सेम प्रोसेस चल रहा है, राइट। ब्रोंक्यूल्स, फिर प्राइमरी ब्रांचेस, फिर सेकेंडरी ब्रांचेस, फिर टर्शियरी ब्रांचेस, आगे आगे ब्रांच करते चले जाएंगे, रीब्रांच करते चले जाएंगे और फाइनली किस में जाके ओपन करेंगे? एल्वुलाई में। Is that clear? Now let me come to next, that is the lungs. As you can see, we have a pair of lungs. Where it is present? कहाँ present है? Upper part of the body, which is called thoracic cavity, right? It is present in the upper part of the body, which is called thoracic cavity. Now this is diaphragm. This structure is diaphragm, right? It is protected or sidewise, right, by rib cage, and below, नीचे abdomen से जो इसकी separation है, that is with the help of diaphragm. Right? जो abdomen से इसकी separation है, that is with the help of diaphragm, right? So at below the lungs, right, in between the thoracic cavity and abdomen, a partition is present. What type of partition? It is diaphragm. It is muscular structure, right? And it is lined by some muscles, right? So एक पार्टीशन प्रेजेंट है लंग्स और एब्डोमेन के बीच में, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम. इज दैट क्लियर? राइट. नाउ लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट लंग and this is the right lung, right? Two lobes of the lungs, right and left, right? Left lung has two chambers. It is divided into two parts. But lobes, you can say left lung is divided into two lobes, but right lung is divided into three lobes, right? Left lung की दो lobes हैं और right lung की three lobes हैं. Is that clear? Right? As you can see outside are the lungs. A structure is present which is called pleural membrane. So lungs are lined or covered by membranes which are called pleural membranes. दो membranes है, inner and outer, right? lungs के बाहर एक covering है जिसको हम क्या कहेंगे? pleural membranes. और इन membranes के बीच में क्या present है? एक space present है जिसको हम कहेंगे pleural cavity. Again I'll repeat, lungs are covered by these structures which are called
प्लूरल मेम्ब्रेन्स, और इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस है जिसको हम कहेंगे प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी में फ्लूइड है विच इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. क्या कहेंगे? प्लूरल फ्लूइड. सो इट्स दिस प्लूरल फ्लूइड एक्चुअली, this helps to this pleural membranes, pleural fluid, they provide frictionless surface to the lungs during their expansion and contraction. They also protect the lungs from some mechanical shocks and all that, right? So this is pleural fluid and pleural cavity. Is that clear to you? Right? So what is this? We are talking about what? Lungs. What type of structures they are? Pinkish, conical, right? I would use the word conical on one side, as you can see, conical, and on one side they are flat, and on the lower side they are covered, they are bounded by this diaphragm, right? And what is entering inside the lungs? Bronchi. Bronchi कहाँ से आ रहे हैं? Trachea से. Bronchi आगे जाके किस में डिवाइड कर रहे हैं? Bronchioles में. Right bronchus enters into the right lung and left bronchi enters into the left lung. I hope it is clear. Oblique fissure left lung को दो हिस्सों में बांट रहा है, 2 lobes में बांट रहा है, और यहाँ पे lung is divided into 3 lobes, 3 parts. I hope the structure of respiratory structure, respiratory system and various organs involved in it is clear to you, right? Now let us see the mechanism of breathing, right? अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन में, राइट? तो जैसे कैसे पहले एंटर करेगा, प्रोसेस कैसे होगा? पहले तो जो एयर है, जो गैसेस हैं, दे विल एंटर थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर किस में जाएंगी? नेजल चेम्बर में, फिर किस में जाएंगी? फेरिंग्स में, फेरिंग्स उसको किस में भेज देगा? लैरिंग्स में. लैरिंग्स की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस. वो किसके द्वारा कवर्ड है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस. फिर लैरिंग्स से किस में जाएगा? ट्रैकिया में. ट्रैकिया के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेजिनस रिंग्स. ट्रैकिया से फिर किस में जाएंगे? ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स किस में एंटर कर रहे हैं? लंग्स, बोथ द लोब्स, राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लंग. और फिर ब्रोंकियोल्स किस में जाके खुलते हैं? इनटू दीज पियर शेप्ड सैक्स जिनको हम फंक्शनल यूनिट्स भी कहते हैं ऑफ द लंग्स, जिसमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल take place. That is what you say, they are the basic structures. About 300 million alveoli are present inside the lungs. So you can well imagine, right, how what is the importance of alveoli inside the lungs, right? Now mechanism of breathing, it's a very interesting mechanism, right? Now let me show you with the help of this diagram. Let us understand how this breathing in and breathing out is taking place. Breathing in means taking in oxygen, or you also call it as inspiration, or we also call it as inhalation, right? Breathing out is called expiration, or it is also called exhalation, right? Breathing in and breathing out. Now breathing in, what happens, right? Some muscles I told you are, these are the ribs, and inside you can see this pinky structure, they are the lungs, right? ये rib cage है, पीछे की तरफ vertebral column, आगे की तरफ sternum, right? कुछ muscles ribs के साथ attached हैं, right? There are 2 set of muscles attached to the ribs, right? One set of muscles pushes the ribs towards outer side, another set of muscles pushes the ribs towards an inner side, right? एक set of muscles ribs को बाहर की तरफ खींचता है, दूसरा set of muscles ribs को अंदर की तरफ खींचता है. So what happens? Breathing in, जब इंस्पिरेशन होगी तो क्या क्या एक्टिविटीज टेक प्लेस करेंगी? पहली बात, रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं, दे विल पुल द रिब्स टुवर्ड्स आउटर साइड, राइट? So muscles attached to ribs, they pull the ribs towards outwards as well as sideways. इसको sideways भी खींचेंगी और outward भी खींचेंगी. और diaphragm के साथ जो muscles attached हैं वो भी stretch होंगी, right? And इसको नीचे की तरफ खींचेंगी. एक बात मैं यहाँ बताऊँ, जो normal position है diaphragm की वो ये है. Diaphragm dome shaped structure की तरह रहता है, राइट? जब मसल्स इसको खींचती हैं, इसके साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट, दे विल पुल इट downward, or they will straighten the diaphragm. So I'll repeat what is happening here. Muscles attached to the ribs, they contract,
right? They pull the ribs outwards. Muscles attached to diaphragm contract. They straighten the diaphragm. What is happening? Thoracic cavity enlarges. Thoracic cavity enlarges. Enlarges. What happens? Volume of thoracic cavity increases, right? Rib cage, ये thoracic cavity का size खुल गया, इससे इसकी volume बढ़ गई, and pressure of air inside decreases. इसके अंदर air का pressure कम हो गया. So what happens? To equalize the pressure of the air from outside, air moves from outside to inside. बाहर से अंदर की तरफ air move करना शुरू करेगी. So that results in breathing in or inspiration, right? So what happens in expiration? First of all, जो muscles यहाँ contract हुई थी ribs के साथ, वो relax करेंगी. और एक और set of muscles है, वो ribs को अंदर की तरफ खींच देंगी, right? So another set of muscles, they pull the ribs, they contract and pull the ribs inwards. So they pull ribs inwards. This is with another set of muscles. एक और set of muscles attached है ribs के साथ. They pull the ribs inside. Clear? Muscles attached to diaphragm relax, and diaphragm becomes dome shaped. ये डोम शेप्ड एक्वायर कर लेता है ऊपर की तरफ, जैसे पहली पोजीशन थी, राइट? पहले स्ट्रेटन हुआ, अब ये डोम शेप्ड आ गया. रिब्स की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक सेट ऑफ मसल्स रिलैक्स करेंगी, दूसरी सेट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रिब्स को अंदर की तरफ खींच देंगी, डायफ्राम वाली मसल्स भी रिलैक्स करेंगी और डायफ्राम को डोम शेप्ड पोजीशन दे देंगी. उससे जो कैविटी है, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम अब क्या होगी? कम हो जाएगी. इट डिक्रीजेस. इससे अब जो एयर का प्रेशर है इनसाइड, इट विल इंक्रीज. Pressure of air will increase. So pressure of air increases. Pressure of air increases. So what happens? अब इसमें pressure of air increases to equalize the pressure inside and outside. Air from inside will rush towards outside. Right? So this is what is expiration or exhalation. I hope this much is clear to you. We will repeat once more. Let us, with the help of slide, let us study first. So, mechanism of breathing. When we breathe in air, the muscles of diaphragm contract, move down, and the chest cavity expands, right? Air enters into the lungs. So, it is of two types, expiration and inspiration. So here we are talking about inspiration, right? Or inhalation or breathing in. Is that clear? So हम किसकी बात कर रहे हैं? Inspiration या inhalation की. When we breathe in air, muscles of diaphragm contract, move downwards, the chest cavity expands and air enters into the lungs. साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि चेस्ट कैविटी कैसे एक्सपैंड करती है. रिब्स की साथ जो मसल्स जुड़ी हुई हैं वो भी रिब्स को बाहर की तरफ खींचती हैं. When we breathe out the air, muscles of the diaphragm relax, move upwards and the chest cavity contracts and the air goes out of the lungs. Right? So let us study more details about breathing in. Right? Now when we breathe in air or inhale, two things happen at the same time. Muscles between the ribs contract. Right? I told you two set of muscles are present in between the ribs. Right? Causing the rib cage to move upward and outward. कहाँ खींच देंगे ribs को? बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ. Diaphragm will contract, right? And it will move downwards. It will straighten up. It will straighten up. Right? Is that clear? All these movements क्या करती हैं ultimately? Increase the space in the chest cavity. Make it larger.
So air is sucked inside the lungs. So lungs get filled up with the air and expand. Is that clear? I'll repeat. Muscles between the ribs contract, causing the rib cage to expand, right? To move upward and outward. Diaphragm contracts, moves right downwards. This increases size of thoracic cavity, right? So what happens? Air moves inside to equalize the pressure of air on both the sides. Is that clear to you? Right? So this is happening in breathing in. Now what is happening in breathing out? Breathing out. What happens? Muscles between the ribs relax, causing the rib cage to move downward and inward. Here another set, I will add here another set of muscles attached to ribs contract. Another set of muscles attached to the ribs contract, right? Diaphragm relaxes and moves upwards, becomes dome shaped as I have explained earlier, right? So what happens? Volume of the thoracic cavity decreases, right? Pressure of air inside, what happens? Increases. So air moves out to equalize the pressure on both the sides. Is that clear to you? So this is about breathing in and breathing out. I hope it should be clear to you now. Right? So again, with the help of diagram, you can see the chest expands. This is sternum, these are ribs. This is diaphragm, diaphragm contracts, results in inhalation. Diaphragm relax, chest contracts, this results in exhalation. I hope these two things are clear to you, right? Now let us see how the oxygen and carbon dioxide move into the respiratory system. Now oxygen from air enters the nasal cavities, then enters into pharynx. From pharynx it goes into trachea, say bronchi, then bronchioles, and then alveoli. So alveoli are the basic structures where the exchange of gases will take place. They are the respiratory surface where what will happen? Another step, that is external respiration, takes place. I'll repeat. ऑक्सीजन एयर से आई, ठीक है, ये ट्रैवल करके कहाँ पे आ गई? एल्विलाई. एल्विलाई मैंने बताया था पेयर शेप्ड सैक्स हैं. तो एल्विलाई तक जब एयर पहुंचेगी तो उस एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो वो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उसमें ज़्यादा होने की वजह से वो ऑक्सीजन किस में चली जाएगी? एल्विलाई में. एल्विलाई में जो टिश्यू से आई हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एल्विलाई से फिर किस में चली जाएगी? यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, राइट? दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो ऑक्सीजन जो ब्रोंक्यूल्स लेके आए थे वो एल्विलाई में चली गई. एल्विलाई से चली जाएगी टिश्यूज में. टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड आई थी एल्विलाई एल्विलाई तक, और एल्विलाई से फिर वो आगे चली जाएगी इनटू ब्रोंक्यूल्स. सो दिस इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? And bronchioles, say bronchi, then trachea, then pharynx, then into nasal cavity, and goes back to the environment. So this is the exchange of gases. This is breathing movements, breathing plus external respiration. Breathing is simply the exchange of gases. When the exchange of gases is taking place at the respiratory surface, which is called alveoli, it is called as external respiration. I hope it is clear to you. Right? Now,
see this with the help of this activity, with the help of this diagram, we can understand the process of respiration more better, right? अब इसमें हमने क्या किया है, 2 jars लिए हुए हैं, right? और उन 2 jars में एक ट्यूब्स की हेल्प से 2 balloons हैंग किए हुए हैं. अब ये balloons किसका काम कर रहे हैं? lungs, they are representing the lungs, right? और नीचे हमने एक membrane टांग दिया, right? जो कि किसकी तरह फंक्शन करेगा? डायफ्राम का, राइट? जब हम इस मेम्ब्रेन को नीचे की तरफ खींच देंगे, राइट, जब मेम्ब्रेन को नीचे की तरफ खींच देंगे तो हम व्हाट वी विल सी, इसमें लंग्स में एयर भर गई और इस कैविटी, इसमें क्या हुआ? वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया. प्रेशर ऑफ एयर इट विल डिक्रीज हियर. Pressure of air decreases, right? Volume increases, pressure of air decreases. So what will happen? तो air कहाँ अंदर आएगी, इसमें lungs में भर जाएगी. इसमें क्या किया? ये हमने छोड़ दिया डायफ्राम को, ये वापस अपनी शेप ले लेगा, राइट? मेम्ब्रेन अपनी शेप ले लेगा. इससे वॉल्यूम क्या है? कम हो गई. प्रेशर क्या हुआ एयर का? इसमें इंक्रीज हो जाएगा. प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज हो जाएगा और ये बैलून्स क्या करेंगे? दे विल रिलीज द एयर टू आउटसाइड थ्रू दिस ट्यूब्स. दिस इज एक्सपिरेशन एंड दिस इज इंस्पिरेशन. इज दैट क्लियर टू यू? राइट? नाउ some important points before I take up important points. We have discussed what? Breathing movements. We have discussed external respiration. Now internal respiration. External respiration में क्या था? टिश्यूज के रेस्पिरेटरी सरफेस पे जो एक्सचेंज हुआ, राइट? एल्विलाई में एक्सचेंज हुआ. क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में एंटर कर गई और कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई से वापस ब्रोंक्यूल्स में चले गई. ठीक है? अभी जो ऑक्सीजन एल्विलाई से अंदर जा रही है, इट विल गो टू टिश्यूज, राइट? इट विल गो इनटू सेल्स एंड टिश्यूज. सेल्स एंड टिश्यूज में ऑक्सीजन क्या करेगी? जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसकी ब्रेक डाउन करेगी. सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन हम इसको कहेंगे. इट विल ब्रेक डाउन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? इंटरनल रेस्पिरेशन. Is that clear to you? Now breathing occurs. Now important points, coming back to important points regarding breathing. It is involuntary, but the rate of breathing is controlled by respiratory substrate or system of the brain. Respiratory movements or respiration is controlled by the brain. The average breathing rate in adult man at rest is 15 to 18 times per minute, and this rate of breathing increases with the increased physical activity. Oxygen required for breathing and respiration is carried by hemoglobin pigment. Oxygen combine करती है किसके साथ? Hemoglobin के साथ. क्या बनाती है? Oxyhemoglobin, right? Which is present in our blood, right? Normal range of hemoglobin in the blood of human adult is 12 to 18 grams per deciliter of blood. Now, deficiency of hemoglobin, it reduces the oxygen carrying capacity of the blood, resulting in breathing problems, tiredness, and lack of energy. So, these are some important points regarding breathing. I hope it is clear to you. Right? All the 4 steps are clear to you for this respiration. क्या steps किए हैं? Breathing. Then we have discussed external respiration, we have discussed internal respiration, and then we have discussed cellular respiration, right? Now let us see what we have understood about respiration. Now let us try to answer these questions. What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration, right? I told you, terrestrial organisms, they take oxygen from the air, right? And aquatic organisms take oxygen from the dissolved oxygen present in the water. So dissolved oxygen present in water is lesser as compared to oxygen present in the air. So the breathing rate, they need to breathe faster. Aquatic organisms, they need to breathe faster as compared to terrestrial organisms. So we can say the rate of breathing is faster in aquatic organisms as compared to terrestrial organisms. What are the different ways
in which the glucose is oxidized to provide energy in various organisms. So I told you glucose changes into pyruvate. Pyruvate enters into 3 steps. That is, one is fermentation. Fermentation, it will form ethyl alcohol plus carbon dioxide, or it will form lactic acid in muscles plus carbon dioxide, or it will form carbon dioxide plus water plus energy in case of mitochondria. So we have discussed all these steps. That is aerobic and anaerobic respiration. Next question, how is oxygen and carbon dioxide transported in the human beings? Oxygen and carbon dioxide कैसे transport होते हैं? As I told you, कहाँ पे exchange हो रहा है? Alveoli में. कौन लेके जाएगा? Alveoli से आगे blood. Blood किसके पास लेके जाएगा? Tissues. ठीक है? तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करती है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड इट इज कैरिड टू द टिश्यूज. टिश्यूज में क्या है? ऑलरेडी द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज बीइंग ब्रोकन डाउन एंड व्हाट इट इज फॉर्मिंग एज अ बाय प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ब्लड, क्या बनाती है? कार्बोक्सी. व्हाट इट फॉर्म्स? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन. तो ऑक्सीजन कैसे कैरिड होती है? थ्रू द विद द हेल्प ऑफ ब्लड इन द फॉर्म ऑफ oxyhemoglobin. Carbon dioxide combines with hemoglobin to form carboxyhemoglobin and is carried back from the blood to alveoli and then to outside. Right? How are the lungs designed for maximum to maximize the area for the exchange of the gases? Right? Now in the lungs we have about 300 million alveoli. राइट? एल्वुलाई किससे बने हैं? ब्रोंक्यूल से. तो हम कहेंगे ट्रैकिया आगे डिवाइड करती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स एंटर करते हैं इनटू टाइनी सैक्स, pear shaped sacs which are called alveoli. अब alveoli, they are richly supplied by blood to increase the surface area for the exchange of the gases. Right? So this is about, let's revise. Right? So this is all about the topic respiration. I hope it is clear to you. Thanks for watching this video. We'll come again with another interesting video. Till then, goodbye.